Assalamu alaikum everyone. Welcome to the session. What are adverbs? Adverbs means something that adds meaning to the verbs. Okay? So adverbs modify or describe, what exactly? Modify or describe verbs. Okay? For example, she sings beautifully. They tell us also, बहुत important बात, they explain us, they tell us how, when, where something has happened या to what extent something has happened. यानी कि जो भी एक्शन हो रहा है, रन कर रहा है, तो ये एक्सप्लेन करते हैं how is the subject running, how is he or she running. कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं. The boy runs fastly. अब यहाँ पे fastly क्या है? एडवर्ब है. वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि एक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है. सो अगर कोई भाग रहा है तो कैसे भाग रहा है? कैसे भाग रहा है? हाउ इज ही रनिंग? ही इज रनिंग फास्टली. ठीक है, ही इज रनिंग फास्टली. वेरी गुड. सिमिलरली, सो ये हमें हाउ बताते हैं कि एक्शन हुआ कैसे, कब हुआ, क्यों, हाउ, व्हेन, वेयर, टू व्हाट एक्सटेंट द एक्शन हैज हैपेंड. सो एक्शंस के बारे में ये हमें क्वेश्चंस को आंसर करते हैं. द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड. बच्चे खेल रहे हैं. कहाँ खेल रहे हैं? आउटसाइड खेल रहे हैं. द किड्स आर प्लेइंग कहाँ खेल रहे हैं? आउटसाइड खेल रहे हैं. सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्शन इज हैपनिंग, but where is it happening? So where the action is happening, यहाँ पे बताया जा रहा है where the action is happening. ठीक है, कौन सा वर्ड है यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्शन कहाँ हो रहा है? Can anyone tell me, my dear students? Outside. So outside is what here? Adjective or adverb? Adjective or adverb? It's an adverb. Perfect. Okay. They will leave tomorrow. They will leave. अब they आ गया, will आ गया, leave आ गया. So ये कल जा रहे हैं. And then we have tomorrow. Tomorrow is answering a question. When are they leaving? So which word is telling us tomorrow? So tomorrow is an adverb here. Perfect. Well done. Last example. She speaks very nicely. She speaks politely. So speak तो हो गया यहाँ पे action. How does she speak? How does she carry out that action? Politely is an adverb here. Perfect, beta. Perfect. Okay, ji. Then we have preposition, conjunction, interjections, which we will do inshallah tomorrow. Okay. So रिवाइज कर लेते हैं. Noun are the subjects. They are the words which tell us who is performing this particular action. Okay, so noun name things, pronoun replace the noun, verbs shows action or state of being or occurrences, adjectives describe the qualities of noun, and adverb describes verbs, adjectives or other adverbs. So adverbs always add to the meaning of the verbs. Okay, always adds to the meaning of the verb, explaining us how the particular action has happened.